कर्म तो मुझे करना पड़ेगा. He's just so humble and so modest. You will have to prove yourself every single day of your life. 3 stages होते हैं. लव स्टोरी की प्यार, तकरार. दोस्तों दुनिया में हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर होता है. जैसे कि अगर हर मार्केट में अगर आप देखो वो जो परफेक्ट मैनिक्वीन होता है वो सिर्फ एक ही इंसान को देख के बनाया जाता है. वो है हर्षवर्धन ओवर हियर. इज गॉट द परफेक्ट फिजिक, द परफेक्ट हेयर. मैं हर बार तारीफ करता रहता हूँ इनके बालों का. एंड ही ऑलवेज फील्स ब्लशेस एंड स्माइल्स एंड व्हाट नॉट. ही ऑलवेज डिजर्व्स दैट अप्रिसिएशन फॉर रियल. तालियां बनती है कि नहीं उसके लिए? कम ऑन. एंड इनके साथ जो यहाँ पे मौजूद है, शी बेसिकली सिर्फ बिलाल को नहीं, शी लिटरली हैज़ द पावर टू एक्चुअली roam around all sorts of guys with all sorts of imagination and wild power and everything. She's got everything in her way. The lovely, charming Sonia Rathee over here. Can we clap for her as well, please? Global, 100%. Global mannequin. Tell me something, guys. For you, you've been doing quite some interesting work. For you, this is your debut in movies. I'm pretty sure it's not any different in terms of the acting mechanism or whatever you bring to the table as a performing artist, but still emotions are different because platform alag hai. It was OTT, broken, that was different, this is different. Tell me about the emotion part of it. I mean, it's definitely incredible knowing the theatrical release hai. That's kind of a dream for any actor, really. Yeah, you're right. Technically, as in the acting capacity, it's not much different. But the way storytelling is, that's very different. You know, in web shows you get around 6 to 8 hours to tell a story versus यहाँ पर हमें बस 2 घंटे मिलते हैं. But yeah, it's a lot of fun and it's just a really quick, fast, fun journey. And I'm very, very grateful because it is my debut and you know I got an amazing co-star, an amazing director, amazing producers, and such a wonderful cast and crew. And we were a great family on set. You know, ये तो बात हो गया कैमरे में बोलने का. आप सीनियर हो कंपैरेटिवली. डेब्यूटेंट को आपने सेट पे परेशान किया कि नहीं? सच बात बताना मुझे. नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं किया. कुछ नहीं किया परेशान. He wants to add something, I'm sure. मैं खुद ही अभी डेब्यूटेंट ही हूँ. मैं खुद. That is your humble attitude speaking, bro. नहीं, इसमें जब तक आपकी कोई फिल्म सक्सेसफुल काफ़ी ज़्यादा नहीं होती, स्पेशली नंबर्स, तब तक आई थिंक कि दिस इज द रियलिटी. अब इसमें आप लोग और ऑडियंस काफ़ी सारा प्यार देते हैं, वो अलग है डिपार्टमेंट, बट फिल्म का सक्सेसफुल होना इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. सो आई ट्रीट देम बोथ वेरी सेपरेट. आई लव द वे bifurcated actually, and you actually know the thing कि practically कहाँ आप रहते हो and also that's very important. I really want to know from your end because I think you have had a fantastic struggle story. I think आपने बोला कुछ था कि You were, I think, a delivery boy and आपने जॉन इब्राहिम सर के घर पे जाके कुछ डिलीवरी किया था. So from there onwards, coming here, becoming a mainstream actor, it takes a lot because I don't think there are many stories many success stories involving something like this. Looking back, do you feel कि मतलब वो क्या था? Like, was it a part of your struggling phase? या फिर उस टाइम पे जब आप वो चीज़ कर रहे थे without demeaning any work, at that point of time you realize कि नहीं यार, I've got the charm, I've got the personality, maybe I should do something better with that. तो एक्चुअली उससे मैंने यही सीखा है कि आज भी अगर मुझे दिक्कतें आ जाए लाइफ में, जिसका कुछ भरोसा नहीं, तो मुझे एक अंदर बहुत हिम्मत रहती है कि मैं अब भी कुछ ना कुछ करके कोशिश करके चला ही लूँगा. क्योंकि मैंने इतने सारे जॉब्स किए, तो मुझे डर निकल गया मन से कि कल को ये काम नहीं चला तो क्या होगा. क्योंकि मैंने इतनी बार मैं मतलब ब्रोक हो चुका हूँ लाइफ में कि नाउ आई नो व्हाट दैट फीलिंग है. Now I know what that feeling is and now I know कि कैसे उसमें से बाहर आना है. So मैंने फिल्म्स मिलने के बाद भी मैंने ये फेज देखा हुआ है. ऐसा नहीं कि पहले मैंने ऑडियंस की साउथ में पहली फिल्म के बाद भी मुझे काम नहीं मिल रहा था, नेगेटिव ही ऑफर होते थे, मुझे नहीं करने थे. तो मैंने कहा कि मैं नेगेटिव तो नहीं करूँगा. तो वो कहते हैं तुम घर पर बैठो. मैंने कहा कि तो मैं घर पर बैठे 2-3 साल में कारपेंटरी करते थे. तो वो अगेन as a job and as a like I used to buy old furniture, strip it, refurbish it, basically shabby chic करके कुछ चलता था, distress, वो नया था इंडिया में. तो मैंने कई अभी लोगों को ना चिपकाया. मैं पुराना खरीद के लाता था और रेलवे स्टेशन से उसको मैं shabby chic करके और distress लोग देखे और उनको मैं बेच देता था. और ऐसे मैंने काफ़ी टाइम. तो मुझे आज भी डर नहीं है कि मुझसे ऐसा कोई दोबारा वक्त ऐसा आया तो मैं उसमें से भी
मुझे ऐसा मन में से निकल गया कि मैं कैसे नहीं, but I want to give it this moment to you because क्या होता है ना, once you become something, लोग आपको जानने लगते हैं, there's this certain sense of ego develop हो जाता है, but I don't think you have that at all because despite being an actor, despite having been there, you know, if you take up odd jobs like that just to retain yourself and survive yourself, I think that takes a lot. So I want to clap for you just for that particular part, ठीक है? And I hope कि वो time आपके ज़िंदगी में कभी ना, it only gets better here onwards. I want to know from your end, now that this thing has started, of course, you have had different perceptions about, you know, Hindi movies in particular. I won't mention every movie abhi South, Hindi, there is no bifurcation as such. Movies are movies, good content is good content that works. If you talk about the Hindi film industry in particular, there's a, you know, obsession in our country when it comes to Bollywood. When was the first time you actually thought in your mind, and when was that first moment of self-belief when you realized कि हाँ, even I can make it? Because I'm sure you have seen a lot of other actresses who have done well. कोई ना कोई inspirations आपके रहे होंगे. How have you actually come forward in this lovely journey so far? So actually, मैं 5th grade में थी जब मुझे पता था. How sweet. Yeah. मैं यहाँ पर देहरादून में Welham Girls School में पढ़ाई कर रही थी. I was here for a year and a half. And वहाँ पर, I mean, we were the first batch. And ये सारी लड़कियाँ रोती रहती थी because they were so homesick. और मैं बेड पे चढ़ के जरा जरा बहकता है वो गाती थी, और सारी लड़कियाँ हंसती रहती थी. And that was the first time I realized, you know, I had the power to make someone feel entertained, right? And so yeah, entertainment, and I was like, मुझे entertainment में जाना है. And as an immigrant family, you know, we don't come to India very often. Right. So our only core belief of what India is through Bollywood. Correct. So Bollywood was my one core like connection to India. So मैं बहुत देखती थी. My dad is a huge Bollywood buff as well. So फिर, I mean, like, I was just always more intrigued with Bollywood, and I knew, मैंने ठान लिया था तब से मेरे को Bollywood actress ही बनना है. So there was no if and or but. It's just like हो गया. This is the only plan. That's it. This is what I've made for. But you know, just like he has had his own share of struggles, and which is why he's come forward from there onwards. I'm sure it's not been easy for you as well, because ek to you don't have that background where somebody is there to push your profile or something. So it's like starting right from the scratches, you know. So for somebody like you, I'm sure you must have had your share of rejections. Maybe, you know, you've given a fantastic audition, to wo jaake kaam nahi hua, heartbreak moments, etc., self-doubts. Tell me about all those as well. So actually, my journey with acting started in New York. Yeah. I had a marketing finance job in a startup after college, और मैं छुप के acting workshops जाती थी, and then I started finally taking that leap into auditioning, and that's where I first started getting rejections. And I think, you know, very quickly I started to understand that rejection is just part of the job. You can't feel bad about it, because whoever is making that film, whatever character they're making, they have complete right to know, okay, this person fits this better, you don't. And it's not about, oh, तुम अच्छे actor नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है. So that I got quite quickly. And when I moved to India, I must have given like 150 ad auditions. मुझे आज तक एक भी ad नहीं मिला, ever. And so I still get rejected. But no, yeah, you know, one thing definitely was my accent. Because you get stereotyped for that? Do you think you get stereotyped for that? 100%. My brother did too in the beginning, so that's why he used to actually, जब मेरा भाई आया था 7 साल पहले, तो he used to go in with an Indian, he would make an Indian accent, पर उसे याद नहीं रहता था कि वो किसके साथ Indian accent में बात कर रहा था, किसके साथ अपनी accent में बात कर रहा था. But yeah, here people don't understand. Like, it's harder for them to understand कि like, oh, ठीक है, like, she speaks this way, but you know, as actors, that's our job, is to change our accent. कल को मेरे को भोजपुरी की कोई Correct. accent करनी पड़ेगी, हाँ, तो आप बोलोगे तोहार लिए मैं अपना दिल न्यौछावर कुछ भी, whatever it is. But yeah, I think that's something, and I'm really grateful that you know my director and my producers had that faith in me, saw my audition, and were like, okay, ठीक है, she can pull it off, दिल्ली की लड़की, you know. So yeah, that's kind of it. You know, Harsh, you know, सबसे ज़्यादा, you know, people who come from the roots, ठीक है, एक तो होता है उनका जो niche audience होता है, they of course feel happy about the success of that person, but सबसे ज़्यादा I think the closest people who are related to that kind of success is the family. You know, so I want to know from your end, when they're seeing you in that big screen, you know, wonderfully, you know, doing yourself, you know, you're flexing your muscles, showing your good looks, showing your acting skills all at the same time. What has been like the reaction from your family? उन्होंने सबसे ज़्यादा interesting compliment आपको किससे आया, मुझे बताओ. Actually
क्योंकि वो वैलिडेशन आपका सवाल बहुत वैलिड है, बट आई थिंक आई एम सीकिंग द सेम वैलिडेशन फ्रॉम अ डिफरेंट सेक्शन माय लाइफ। फैमिली से नहीं मिला मुझे, तो इसलिए मैं घर छोड़ के 2001-2002 में भाग गया। तो So are you still not in touch with? No, and then I got to know that I lost my dad. So I'm so sorry, I was not aware. So and my mom and dad are separated. So family से ज़्यादा मेरा टच रहा नहीं, but जो एक फैमिली मेंबर जिसने मुझे देखा है ये सारी चीज़ें पागलपन करते हुए, वो मेरी छोटी बहन। और जब मैं पहली बार घर से भागा था तो मैं पकड़ा गया था। Like वापस आओ। तो उसने मुझे ऐसे गंदी सी लुक दी कि एक तो तू मुझे बिना बताए चला गया टाइप वो लुक था, और दूसरा उसका लुक था कि तू उससे भागा भी नहीं गया। पॉइंट वही है। सेकंड टाइम मैंने ना मैं खुन्नस में अब इस बार भागूंगा, अब कोई नहीं पकड़ पाएगा। But she has seen my journey and I feel so grateful. Like I live my father's reactions through her. Actually, it was very emotional for me. 4-5 महीने पहले संजय गुप्ता सर की फिल्म में शूट कर रहा था, तो गोवा में रखी हुई छोटी सी, तो उसको मैंने बुलाया से पहली बार लाइफ में मेरे फैमिली से कोई सेट पे आया, तो अब वो मुझे रोता हुआ देख रही है, एक्शन करते हुए देख रही है, एंड वो आती थी और उसकी आंखों में आंसू होते थे, एंड आई जस्ट केप्ट इमेजिनिंग कि अगर डैड होते तो ऐसा सोचते, ऐसा बोलते, ऐसा बोलते थे। सो आई एम लिविंग ऑल दोज थिंग्स व्हिच यू आस्क्ड थ्रू हर, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उसके थ्रू मुझे ये मिलता है। बट डेफिनेटली मैंने अपने आप को बहुत जल्दी ट्रेन किया था कि वैलिडेशन तो चाहिए डेफिनेटली, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सो सिक्योर, बट वो मैं फिर बाहर ढूंढता हूँ, यहाँ बाहर से कहीं किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया तो मुझे फिर मैं उसको रख लेता हूँ अपने मन में, काफ़ी दिन उससे उसको फ्यूल बना देता हूँ। चीज़ बताओ, इतने खूबसूरत हो आप दोनों, इतने अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज़ है, तारा वर्सेस बिलाल क्यों, डायरेक्ट लव स्टोरी में क्यों नहीं जाता? व्हाट इज दिस वर्सेस वाला थिंग, मुझे फंड आओ प्लीज। No, you do a better job. हमारे डायरेक्टर्स का उनका जवाब है कि हमारी सोच से नहीं आया, उनकी तो वो ये मानते हैं कि प्यार 3 स्टेजेस होते हैं लव स्टोरी के, प्यार, तकरार, इकरार। प्यार, तकरार एंड इकरार। वाओ। सो ही लाइक्स द तकरार वाला पार्ट, उसमें ही ज़्यादा मजा आता है। अच्छा, हाँ। ही सेज कि तकरार वाला पार्ट मुझे, एंड दैट्स व्हाई ही इज केप्ट वर्सेस, सो ही एंजॉयज हर डायरेक्टर का अपना टेक, तो उनका टेक ये है कि तकरार वाले पार्ट पर फोकस करना है। Fantastic. But you know, in today's time, when people talk about love and everything, you know, now you have so many options. You know, earlier ज़माने में क्या था कि when you are invested in a relationship, you are there like for the sake, not just for the sake of it, you are invested into it completely. Now you have so much of options. You have 50 dating apps. You have 100 social media platforms to connect. So अगर कुछ यहाँ पे अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, you can actually, you know, just cut it off and then move forward. So वो जो organic love है, do you feel in today's generation कहीं ना कहीं जाके maybe during the 80s or 90s the kind of love stories that we used to see around, कहीं ना कहीं जाके वो कम हुआ in terms of intensity? I would love to know this answer from Sonia first and then you. Come on. This belongs to you. Yeah, I think that somewhere or the other, my generation for sure is a little bombarded with options. So we have become a little more superficial. And I think that needs to change. I don't know how it will change. But at the end of the day, I know that people are still finding their soulmates. People are still finding love. I think it's about the person. It's how they make you feel. We talked about this a lot yesterday about how you have to be whole first. I hate when people say like, better half, right? You complete me. Correct. Like, I'm I individual. can't live without you. Like, no, that's not how life works. Correct. Like, you should be able to live on your own. You should be complete as a person, and your partner just adds value to your life, and you do the same for them. You know. So yeah, I think that technology just increases your options. You know, back in the day, you could not connect with someone who was living in a different country, and now you know we're chatting online all night with them. Correct. So there's actually a really good book about this. I read it recently. I forgot the name of it, but it was talking about the statistics behind how marriages and couples are now becoming a lot more international than between like
They used to just be neighbors, like society, like the radius. The radius in which you found your soulmate would be very small back in the day because there was just not enough reach. Correct. And now you have the entire world. It's expanded. Yeah, it's expanding. So it's very interesting to see. Yeah. आपके हिसाब से, I don't know whether you can actually define it or not, but ideal relationship. I'm sure it has its own sets of flaws as well. But आपके लिए, what would be the ideal relationship in terms of values, in terms of characteristics? How do you seek that? I think जो भी one-sided होता है मुझे लगता है वो बहुत honest होता है. वो unconditional होता है. तो वो बहुत प्योर भी होता है. तो वो आप जैसे जो खासकर जानवरों से करते हो, खासकर अपने जानवर नहीं, राह चलती है दूसरा, क्योंकि एक तो जानवर आपको बोल के थैंक यू नहीं सकता, पलट के पैसे नहीं दे सकता, तारीफ नहीं कर सकता पीठ पीछे, वो एक्चुअली वन साइड होता है, इन द मोमेंट होता है. आई फील दैट अगर आप करियर से भी करो वो चीज़, तो मैंने वो रोमांस करियर से किया है वन साइड, अभी तक वन साइडेड ही. अगर 28 को आपने पिक्चर नहीं देखी तो अरे नहीं 100% टू साइडेड हो जाएगा, रिलेशनशिप क्या शादी बन जाएगा वो. तो आई फील मेरा प्यार जो मेरे करियर की तरफ है वो अनकंडीशनल है. कि मुझे जो तुरंत वाली सक्सेस होती है, इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन होता है, वो नहीं भी मिलेगा तो भी मैं लंबे समय तक कोशिश अच्छी वाली करता रहूँ, जिसका कहीं ना कहीं यूनिवर्स में कुछ ऐड हो रहा हो जो कहीं ना कहीं मुझे शायद मिलेगा. तो दैट आई थिंक is love for me. Whatever is unconditional, where you don't seek a return. मैंने रिलेशनशिप के बारे में पूछा, आपने घुमा फिरा के बहुत अच्छा खूबसूरत जलेबी बनाया, बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट जलेबी. मेरे लिए एक्चुअली रिलेशनशिप सिर्फ इससे नहीं होता, मेरी गाड़ी से मेरा रिलेशनशिप. आई नो 100%. मेरे थार का और मेरे कपड़ों के साथ मेरा रिलेशन, मेरे कैमरा के साथ काम करते हैं. बट आपके सारे फीमेल फैंस दे वांट टू नो अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप ना, उसके बारे में कुछ तो बताओ कि लाइक व्हाट शुड योर आइडियल गर्ल लुक लाइक, और व्हाट शुड योर आइडियल पार्टनर बी लाइक, कुछ तो थोड़ा बता दो. आई एम श्योर देयर मस्ट बी डीएम्स फ्लडिंग ऑन योर सोशल मीडिया. माय आइडियल गर्ल वुड बी व्हेन अ गर्ल थिंक्स ऑफ मी एज द आइडियल पार्टनर. तो मेरे को अपनी आंखों में जब एक मिरर दिखेगा, दैट्स स्वीट, वो मिरर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रादर देन कि मुझे उनमें क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि उनको मेरे में क्या चाहिए, वो पहले मैं उस पे फोकस करूँ. एंड आई डू नॉट एग्री व्हेन पीपल से कि उसमें ये खामी है. मुझे लगता है कि तुमने अपने ऊपर किया क्या काम. 100%. Are you right there? Are you 100% correct? Available, in every aspect. तो वो मुझे लगता है कि मुझे शुरू से आदत है कि पहले मैं अपने ऊपर रखूँ. तो काम हो या एक्चुअली मेरे लिए सब एक बराबर ही है, तो इसलिए शायद मैं बार-बार इसमें चला जाता हूँ. गाड़ी के लिए वही फीलिंग. या आपकी गर्लफ्रेंड या पार्टनर बोले गाड़ी सौतन है, दैट इज व्हाट इट इज. या तो आई थिंक एक जॉइंट फैमिली होगी, मेरी कैंपरमैन होगी एंड ऑल द बाइक्स, और मेरे कैडेट होंगे, मोटरसाइकिल होगी, मेरी छोटी बहन होगी, साथ में रहेंगे. Happy hybrid family. Last question, guys, before I let you guys go. Someone like John Abraham backing, talent like you guys, I think it says a lot about the confidence that he has on you guys, because he's come off as a producer over here. And right now, it's a time where movies and cinemas is like a bit dicey and all, but still he's had that confidence on you guys. I'm sure you must have given him good enough reasons to have that confidence as well. Any keynote advice, या फिर कुछ suggestion that he has shared to you with you guys going forward for your career, because right now you guys are still developing in terms of stardom bolo या कुछ और बोलो, and he's been like there for so long, so he knows it in and out the industry. Any interesting suggestion or keynote that is shared which you guys are taking forward? I think he in and of itself is an example of how to stay and how to be successful. That too without any backing, because he's a self-made star completely. Yeah, very self-made star, and he's just so humble and so modest, and just and I think one of his things is like keep your feet on the ground, like be grounded, and I think that's just something that we all have to do. Absolutely. Harsh, anything from your end? Actually, ये जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इसका जो असर होता है बहुत कई लोगों पे डीपली हो जाता है. तो वैसा ही एक डीपली असर मुझ पे हुआ था. मैंने जॉन सर को इंटरव्यू पढ़ा था जहाँ पे उन्होंने लिखा था, कहा था कि आई एम स्टिल ट्राइंग टू प्रूव विद एवरी फिल्म
और वो अभी अभी पढ़ा था। मैं सोच में पड़ गया कि ये इंसान इतने साल से काम कर रहे हैं और प्रोड्यूसर्स ऑब्वियसली प्रॉफिट में है तभी उनको एब्सोल्युटली ऐसे तो कोई मन मर्जी से ऐसे मस्ती में तो कोई फिल्म बनती नहीं है, इतनी महंगी फिल्में बन रही है, प्रॉफिट में ही जा रही है। तो ये आज भी प्रूव कर रहा है अगर अपने आप को, अगर ये इंसान ऐसे सोच सकते हैं तो तुम तो हार मान ही नहीं सकते, तुम तो इतने स्टार्टिंग लेवल पे हो। आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज इम्पैक्ट। वो उन्होंने बिना सिखाए बिना प्रीच करे उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली सिखा दिया कि यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ। सो दैट इज समथिंग। एंड यू आर योर ओन कंपटीशन। वो तो खैर हाँ, मतलब मैं क्या ही कम्पीट किसी से करूँगा, बट आई डेफिनेटली थिंक ऑफ एवरी डे एज अ महाभारत। मैं रोज going to war every day. That's a little. I have to do my fights. I have to do my thing. कर्म तो मुझे करना पड़ेगा. And actually it sounds cliche, but result actually मुझे नहीं पता क्या होगा इसका. But I have to pick up the sword and have to get into the war. तो मैं रोज करूँगा. But मेरे दोस्तों, gratitude should be always the attitude, and I think you guys have that in plenty. May the universe listen to you and all your wishes that you have going forward for the movie. That's a wrap on the Bollywood Talk Show today on IWMBuzz. This is your host Shubhajit. We'll see you again with another interesting episode very soon. Please watch the movie Tara vs Bilal in cinemas near you on 28th October. अपने accent में. 28th October. Now, we cannot miss that accent. That is the most special part of the chat. Thank you guys. That's a wrap.